Good morning, guys. So, आज है 18th of April. The time is 5:10 a.m. right now. It is damn freezing cold in. Oh my god, it is so cold. It is so cold. So the problem is जो मेरा स्वेटर है नॉर्थ फेस का ब्लू कलर का. You all know because I've been wearing that for the whole trip. You all know that sweater because I've been wearing it for like the whole trip. So वो कल स्नो में गीला हो गया. Now I've been in the snow a couple of times and I know कि गीला होता है, लेकिन तो इसके लिए मैंने कल जल्दी अपना जो सूट ड्रेस है वो पहन लिया था, बट स्टिल गीला हो गया. Now you can't do anything, so I'm wearing this extra thing I brought with me. It is, to be honest, of no use, लेकिन ठीक है, like something is better than nothing. So that and the beanie, but it is damn too cold right now. So the plan right now is our friend Henry. So the plan right now is our friend Henry has some work in Bangalore, so he has to go back. So we're gonna drop him off in Srinagar, and then we're gonna go to Sonmarg. So that's the plan for now. I'll see you guys on the way. Look at this amazing view. So I am near Sonmarg right now, on the way to Leh, and this is gorgeous. I have reached Sonmarg. This is Sonmarg, and अभी लेह का रास्ता बंद है. So we will probably stay here. But for now, check out this view. Oh my god! This camera is not doing justice to this amazing view. But trust me, it is the most mesmerizing sight I've ever seen. Reached Sonmarg. I'm standing on the road and it looks gorgeous. Like no words can describe how awesome this view is. So I'll show you guys in a minute. It is extremely cold right now. It is very cold. And here's the view. Here's how it looks in Sonmarg, Kashmir. This is the complete view. It is amazing to be here, to witness this view, to see the sunrise here in Sonmarg, and I'm speechless right now. There is a lot of military here because it is obviously near the border, it is Kashmir and everything. There's no trouble with the cops or the military. They are very, very nice people. If you are nice, don't be rude to them, don't misbehave to them, and they are great people. So now we are just deciding where to stay because the road to Leh is closed. तो जोजिला पास जो है तो वो बंद है. दैट इज़ वाई ले जा नहीं सकते. तो अभी हम लोग सोनमर्ग में रुकने वाले हैं एंड अभी देखते हैं कौन सा होटल है क्या है. राइट नाउ वी हैव फाउंड अ होटल टू स्टे. इट इज़ इम्पीरियल रिसोर्ट्स इन सोनमर्ग. दिस इज एंड दिस इज द व्यू वी आर गेटिंग राइट आउटसाइड द होटल. And this is our room.
So this is the room, and this is a bed. That is Sudarshan. What an awesome view. Jojila Pass is closed, so we can't go to Leh right now. So we will be waiting here. Our local police wala guy is telling us that the pass might open within 2 days, but the tourism center is telling that it might take more than a week. So let's see. We'll take a call tomorrow on what to do. Till then, I'll be staying here in Sonmarg and enjoying this awesome view. My hair looks messed up, but this view, oh my god, it has started snowing right now. और ये देखो. So it is snowing. क्या बोलूँ guys? I don't know why this happens, but whenever I'm in some place, I always get snowfall. अब मेरे को पता है कि लोग मरते हैं to get snowfall because they come to हिमाचल कश्मीर और उनको snowfall experience नहीं करने मिलता. Whenever I have been to Himachal, or right now I'm in first time कश्मीर में हूँ, but whenever I've been to Himachal or any cold place, मेरा नसीब ऐसा है हर बार स्नो गिर जाती है. खूबसूरत लग रहा है अभी गाइस. I cannot tell you how beautiful this looks. Only for you guys. If you promise me, you guys will subscribe and like the video. I will dare to open this window. हाथ बाहर निकालूंगा और शॉट लूंगा. लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉमिस करते हो कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास 3 सेकेंड है. 3, 2, 1 कर दिया. Oh my god, let me close this window. It is too cold. It is too damn cold, and I am a dumb person. I'm not wearing anything because I was sleeping in the heated bed, so I removed the sweater. So yeah, we'll just enjoy this beautiful snowfall from our room. कुछ coffee, चाय कुछ पियेंगे मस्त, and we have heated beds, so everything is good. After approximately 1 hour of snowfall, it has finally stopped snowing, and I've seen a lot of snowfalls, but this is something new for me. So what is happening is the water or the snow is evaporating now because the sun has come out. So I'm seeing this for the first time in my life, like something like this happening. So अभी हम लोग इधर ये स्नो का पहाड़ है एक, तो उधर वी आर गोइंग अप, वी आर ट्रैकिंग द माउंटेन. कुछ ऊपर एक्टिविटीज़ है ऐसा सुनने में आया है, तो लेट्स सी. सो दिस इज़ द माउंटेन विच वी आर गोइंग टू ट्रैक. इट्स टू ब्राइट, बट वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम देयर, क्रॉस दैट पीक, एंड वेयर द जिधर वो आपको बादल दिख रहे, तो उधर हम लोग जाने वाले. सो गाइज, आई जस्ट ट्रैक्ड अप द माउंटेन अ लिटिल बिट. So around 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ, and this is the view behind me right now. So there is a glacier there up somewhere. भाई इधर से ग्लेशियर कितना दूर है? यहाँ से होगा कैसे किलोमीटर है? 2-3 किलोमीटर. 2-3 किलोमीटर ऊपर अपना ग्लेशियर है, तो देखते हैं उधर तक जा पाए तो चले जाएंगे. This is beautiful. Like no words are enough to describe this. I don't even know what to say. I'm very sorry. I'm at a loss of words. मेरे को पता नहीं क्या बोलना है. बहुत ज़्यादा खूबसूरत. I'm staring at a mountain. I'm going to go climb there. I have trekked around 2 kilometers now into the snow, and I'm going to go climb this mountain. So this is how it looks from here. So this is the mountain. I'm not a professional mountaineer to climb big mountains. So where there is जिधर रास्ता है तो उधर मैं चढ़ रहा हूँ. तो जब तक रास्ता जाएगा आई विल क्लाइंब. आई एम वेरी टायर्ड, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, बट इट्स ओके. इट्स अ ग्रेट एडवेंचर. बहुत मज़ा आ रहा है. भाई साहब, फट गई है मेरी. ग्लेशियर ऑलमोस्ट और आधा 1 किलोमीटर ऊपर है. आई कैन सी इट फ्रॉम योर. सो सुदर्शन इज़ बिहाइंड द कैमरा राइट नाउ रिकॉर्डिंग. हम लोग दोनों ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके आए. आई एम वेरी टायर्ड. मेरा गला सूख गया है, ठंडी बहुत है, बट इट इज़ एन एडवेंचर. एंड मैं 2-3 बार गिरा भी. मेरे हाथ पे थोड़ा मिट्टी लगी है, चीखल लगा है. बट द थिंग इज़, आप जब गिरते हो यू हैव टू कीप
standing up and going your way. So whenever you fall down, don't back down, keep going. I know थोड़ा philosophical हो रहा है, लेकिन अभी भाई almost 12-13 हज़ार फीट पे हूँ. आई एम ट्रैकिंग द माउंटेन. what do you guys want me to do? थोड़ा philosophical हो गया हूँ. हमको और 4 किलोमीटर नीचे जाना है. The same way we came up, we have to go down again 4 kilometers. I'm not going up to the glacier क्योंकि और आधा 1 किलोमीटर है. एंड 1 किलोमीटर साउंड्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लगता है 1 किलोमीटर, लेकिन ये आपके नॉर्मल रास्ते नहीं है. दीज आर स्नो. 4-4 फीट का, मेरे नी तक स्नो था एक पॉइंट पे. सो 4-4 फीट का स्नो है. तो 500 मीटर के लिए भाई कम से कम 20 मिनट लगते हैं चलने को. एंड द टेरेन इज़ टफ. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम गाइज. तो अगर आप कोई माउंटेनियर हो, डोंट लाफ एट मी, बिकॉज आई एम क्लाइंबिंग अ ह्यूज माउंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. पहली बार मैं इतना बड़ा पहाड़ चढ़ रहा हूँ, वो भी बर्फ़ का. तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे 4 किलोमीटर. सो द डाउनवर्ड I just fell down. So now the downward journey begins. And pray for me that I don't fall down. So it is a kind of a slush also. So you have the risk of slipping. That's that. So if I record, I'll fall for sure. So I'll see you guys once I'm down. So I just wanted to show you how difficult it is climbing in this snow, because this snow is very soft. So you keep going down like 3 feet or something. So you keep going down 3 feet. So this is how I'm walking. So see, my leg is stuck. So I'm finally down. Oh my god. it was a ride, man. It was a ride. आ गया हूँ नीचे finally, and I'll just show you guys where I was. So if the sun is too bright, but so that big mountain, we were just at the base of that mountain, so above the trees, so behind the trees actually. So it is, as I'm coming down, it is becoming hotter. ऊपर बहुत ठंडी. It was around minus something on the top. I used to come to Himachal. मैं हमेशा ये बर्फ़ वाले पहाड़ों को देखता था, and I wanted to climb one. So I finally climbed one today, and it was fun. So this mountain in front of me, the stupid dumb me, मुझे हमेशा लगता था कि इनको चढ़ना आसान होगा. लाइक ऑब्वियसली आसान मतलब टाइम तो बहुत लगेगा, 4-5 घंटे, लेकिन आसान होगा. बट अभी आई वेंट जस्ट 5 किलोमीटर्स अप दिस माउंटेन बिहाइंड मी, एंड इट वॉज टफ मैन. क्योंकि मेरे पास वॉकिंग स्टिक्स नहीं है, देयर इज़ नथिंग फॉर सपोर्ट, और बर्फ़ में आपका पैर हर बार आप एक स्टेप ले रहे हो 5 फीट नीचे जा रहा है. तो इट वॉज़ वेरी टफ. सो अगर आप कभी आए टू क्लाइंब अ स्नो पीक और अ स्नो माउंटेन, गेट सम वॉकिंग स्टिक्स एंड गेट गुड शूज़. अगर आपके पास बड़े गम बूट्स या फिर गुड शूज़ नहीं हैं, तो द स्नो विल गो इनसाइड योर सॉक्स एंड स्टफ, एंड यू विल बी डैम्ड. एंड ऑल्सो सॉरी अबाउट द शेकी फुटेज. मेरा ट्राईपॉड में गाड़ी में रखा था,
So मैं tripod लेके नहीं आया हूँ. I'm vlogging with my hand. So sorry for the shaky footage. So now I'm completely down the mountain, and now you guys will have a better view of the mountain I just climbed. So this is it. This is the mountain, and we were somewhere over there behind those trees on the back side of that mountain. So the glacier is over there and I was over here. So I hope you guys have a better perspective of which mountain I climbed.